So, Congratulations. welcome back and good morning, everyone. And thank you so much for being so consistent on the sessions and practice and everything, right? So it's like really lovely to have early in the morning, everyone wakes up and kind of, and so consistent with the practices and so many victories that come around. So incredible. So today is the last day of our journey in terms of the 28-day chapters. Today is the 28th day. And, going forward, we've studied this many times, but every time there is a newness and there is a freshness. And when there is a constant freshness, there is a charm in life all the time. It shouldn't be boring. Nothing should be boring, even if it is repeating, because the expansion and progression and growth is a never ending process. And you see that every month the same chapter looks very different to us, and that is how much we have grown, because our viewpoint, our understanding, and the state of consciousness we are in now, that's very different from what it has been last month when we did this chapter. The state of consciousness was even more different when we had done before that. So the understanding and the way we are viewing things is changing. Like in yesterday's mirror practice, I think the whole thing had started with that paragraph that, the way you are viewing the things now, that has changed because you have changed. So, and we are constantly changing in terms of our perception, agreements, views, everything, right? So we go to the next chapter for today, which is, how the way forward opens up and the magical future. So I'll just bring it on the screen. Yeah, so this is remember the magic now, whereas we just see the picture here, the image which is shown. Deepa, would you want to read this? So this is like, अब जिंदगी में ups and downs, अंधेरा, तो इसमें ना एक रोड बनी हुई है. उस रोड पे एक path बना हुआ है, which is totally like illuminated. Right? And this path is where we have to walk. This is the path of gratitude. And it says that no matter there's darkness on the left, there's darkness on the right side, there might be darkness behind, there might be darkness in the front, but right now, when you continue walking इस वाले रास्ते पे जब हम चलते रहेंगे, तो हमको कुछ डरने की जरूरत नहीं है. तो leaning on gratitude becomes very, very important for us. Lean on gratitude. It will never fail us. It says, no, that gratitude is your best friend. So like the best friend, we know that the best friends will never cheat us. The best friend will always support us. The best friend is our 3 a.m. friend, right? So gratitude ko apna best friend bana lo, and then there will never be any looking back in life. So we just, oh, sorry. Yeah. Deepa, are you logged in? Would you want to read? Yes, I think ma'am she's muted because वो समय आवाज आई थी, मैंने mute कर दिया था. I think she needs to unmute herself. ठीक है. Yes, ma'am, I want to read. चलो, आप पढ़ो फिर. Day 28. Remember the magic. Quote, that's the thing with magic. You have got to know it's still here all around us, or it just stays invisible for you. Unquote. Charles D. Lint, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now,
or what desires you will have in the future. This magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel specially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a solution, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember the magic and One list. sec, Deepa, we'll just take a break here. So Yeah, it says that every day is unique. So, like हम लोग जब भी खाली होते हैं ना, मैंने ये देखा है कि हमारा दिमाग हमेशा किसी ऐसी जगह पे जाता है जो, like we start worrying or we start thinking about the past. We start dwelling into something that had happened at work. कभी किसी के साथ conversation हुआ था और वो unpleasantness थी उस conversation में. मतलब ये ह्यूमन माइंड ना बहुत आराम से फियर एंड वरी की तरफ ड्रिफ्ट होता है, और ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है ना, क्योंकि ये बहुत नेचुरल चीज है, और ये जब से ह्यूमन रेस इवॉल्व हुई है अर्थ के ऊपर तब से ये चल रहा है, बिकॉज अपने आप वरी एंड फियर की तरफ जाता है, बिकॉज तब हमको एनिमल से प्रोटेक्ट करना पड़ता था एंशिएंट टाइम्स में, तो इसीलिए वरी एंड फियर का जो बहुत कॉम्पोनेंट है हमारी ब्रेन में ना, वो बहुत पावरफुल है, मतलब हम बने ही वैसे हैं फिजियोलॉजिकली. सो इसलिए जैसे ही आप खाली हो रहे हो ना, आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछने लग जाओ. So I was seeing a video by Vishen Lakhiani from Mind Valley. उन्होंने पूरा एक 45 मिनट का वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई कॉन्स्टेंटली कीप आस्किंग माई सेल्फ नाइस क्वेश्चंस, नॉट द बैड क्वेश्चंस. दैट अच्छा वाओ उस पर्सन ने क्या क्वालिटी है, उसने कल क्या बोला कि कल मुझे अच्छा लगा कॉन्वर्जेशन, सो इन दैट कॉन्वर्जेशन ऑफ 10 मिनट्स व्हाट आर द थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड. So he said that keep asking yourself questions. Anyhow, the subconscious mind loves being asked questions. ठीक है, आप सवाल करते रहो, आपको जवाब मिलता रहेगा. और अच्छे क्वेश्चंस पूछो कि और क्या हुआ था कल ऑफिस में, क्या हुआ था कल, मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, हाँ यस, मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा लगा, अच्छा ये वाला लगा. अच्छा मेरी वार्डरोब में ड्रेस कौन सी सबसे अच्छी है, व्हेन आई वोर दैट ड्रेस हाउ वाज आई लुकिंग. anyhow we should be doing, although ये practices तो हमको कल के लिए बोल रही है, that yesterday के दिन में से आप सारे choose करो, goal choose करते रहो, but otherwise also the moment we are empty, dwell on those questions that really make you feel good, and you will see that subconscious आपको जवाब देता रहेगा. You can even ask questions like how can I receive 10 lakh rupees every month invariably, मतलब savings account, net profit, हाँ, सारे खर्चे वर्चे होने के बाद.
How can I receive that much amount after all my expenses? Like I want to have 10 lakh rupees saving every month. How can I do that? Subconscious mind, can you do that? So ask more questions. And this is one aspect that I have seen in all the books that I have read, and I read so much. Okay. And all the books, they say that keep asking yourself questions, growth questions, progressive questions, questions जिसमें आपके dreams answer होते हैं. ठीक है. और यहाँ पे आज वाले चैप्टर में भी यही लिखा हुआ है कि हर दिन यूनिक होता है. कल में से सारा सोना छान के निकालो, अच्छी अच्छी चीजें सोचो, क्या हुई थी, किसने क्या बोला था, अच्छा आपने शूज पहने थे, कितने कंफर्टेबल थे, पूरे दिन आपको बड़ा मजा आ गया, और मैंने क्या किया था, मैं सोचूंगी अच्छा कल एयरपोर्ट कैसा था, बहुत मजा था, अच्छा मेरी फ्लाइट वाज सो कंफर्टेबल एंड आई जस्ट गॉट इन एंड आई गॉट सच अ लवली सीट यस्टरडे, मजा आ गया, आई मीन द व्यू वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई सॉ द क्लाउड समवेयर इन सन एंड sunrise and everything, it was so beautiful. और क्या हुआ था, और हुआ था that when I reached Ahmedabad, I got the cab and cab वाला was so good. जब हम पेमेंट करते हैं कैब को, तो कोई भी उसने मुझे मैसेज भेजा, thank you so much, no one sends, I mean the cab walas would not send a message like that. Okay, so वो बाद में when I checked in into, so in the morning itself I checked in into the hotel. Okay, so and then I went to work because जल्दी की फ्लाइट थी, जल्दी पहुंच गई थी यहाँ पे. So वो सुबह मैं होटल में चेक इन किया, मैंने देखा एक मैसेज आया हुआ था उस पे, thank you so much. Okay, and that was from the cab driver to whom I had paid the money. I mean like मैंने उनको जीपे किया था, जो भी था. So it was like मुझे इतना अच्छा लगा ना to receive, हम कितने मतलब, तो उससे मुझे पता लगा कि थैंक यू कितना मैटर करता है. मुझे इतना मैटर किया थैंक यू जो उन्होंने बोला था. तो इस तरह से बहुत सारी दिन में अच्छी अच्छी चीजें होती है. हम इतने लॉस्ट वर्ल्ड में रहते हैं ना, मतलब तो हम एक्नॉलेज ही नहीं करते वो छोटी छोटी चीजों को, that it was so easy to walk from place A to place B, or whatever, somebody's behavior was so nice, what a beautiful smile when we saw a neighbor, और बिल्कुल $1 million स्माइल कोई देख के हमको देता है, तो हम एक्नॉलेज नहीं करते ऐसी छोटी छोटी चीजों को. अब हमको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी. हमको वी हैव टू एक्नॉलेज द स्मॉल लिटिल थिंग्स जो हमारी जिंदगी में हुई है, जो हम अभी इग्नोर करते हैं, मैं भी बिल्कुल वो नहीं करते. खाना खाते हैं तो रोज ही अच्छा बनता है, हमें पता है कि हमारी कुक तो बहुत अच्छी है, ठीक है. तो खाना, जब आप खाना खाने बैठते हो तो यू माइट जस्ट इग्नोर, बहुत अच्छी सी कोई वेजिटेबल बनी है, और इफ यू ईटिंग अ बिरयानी बहुत टेस्टी है, रायता बहुत टेस्टी बना है, मैंगोज खाए कट के, क्या मीठे मैंगोज थे, इस तरह से वी डोंट एक्नॉलेज दीज लिटिल थिंग्स दैट हैपेंस, क्योंकि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है हमारे घर में जो कुक है वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तो ये तो रोज की बात है, क्यों एक्नॉलेज करना. इसलिए फॉर ग्रांटेड तो कुछ भी नहीं लेना है ना. अगर रोज अच्छी वेजिटेबल बन रही है ना, और रोज पाइपिंग हॉट राइस अगर आपके प्लेट में आ रहे हैं, रोज दाल हो रही है जिसमें नमक बिल्कुल ठीक है, मसाले बिल्कुल ठीक है, देसी घी डाल के बहुत टेस्टी लग रही है, एक्नॉलेज दैट एंड से थैंक यू. रिमेंबर द मैजिक यही तो है कि पूरे दिन भर में से ढूंढो और ज्यादा ढूंढो कि वाओ इट इज सो नाइस, एंड देन एक्नॉलेज एंड टेल द पर्सन जिसने बनाया है कि आपने ये खाना बहुत टेस्टी बनाया, आज मुझे दाल खा के गरम गरम मजा आ गया, मुझे दाल राइस बहुत खाने में अच्छे लगे, या ये बहुत अच्छा बना है, या वो बहुत अच्छा बना है. So we generally ignore these little things. तो अब से हमको ये ध्यान रखना है. रिमेंबर द मैजिक का मतलब नहीं है कि टेक्निकली क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि अब कल में से हमको अच्छी चीजें ढूंढनी है, बट इतनी सारी, पता है 1000 चीजें ढूंढने की होती है. वेट ही मत करो ना, उसी टाइम थैंक यू बोल दो, तो पूरे दिन ही हमारा ऐसा निकलेगा, क्योंकि फिर हम देखेंगे कि पूरे दिन में एक स्टेप आगे लिया और इतना सारा थैंक यू. मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं. जब कल मैंने चेक इन किया तो उन्होंने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में मुझको रूम दे दिया था होटल में, विच वाज नॉट दैट ग्रेट, बट आई वाज सो अप्रिशिएटिव. बट मैं जब जा रही थी तो मैंने कहा कि अभी तो आई एम गोइंग टू ऑफिस इन द मॉर्निंग. It was 10 o'clock in the morning. I said, I'm going to work. Please change my room. मैंने बैग पैक करके रख दिया है in the evening, and give me the room where I normally stay, because I keep coming here very often, and सारे hotels अब जान पहचान हो गई है. So I said that give me the room that I kind of normally take, and you can shift, because उसमें मुझे थोड़ा वैसा लग रहा था. So anyhow मैंने किया, और शाम को मैं आई तो वो $1 million स्माइली के साथ फ्रंट ऑफिस में, मैम आई एम सो ग्लैड टू सी यू अगेन, एंड last time I was the front office person who was there. Imagine इतने गेस्ट आते हैं और उसको मेरी शक्ल याद थी. So he was so appreciative and so welcoming and such broad smile that I was so tired when I entered in the evening. 8:20 हो रहा था रात को.
And but then I saw him and everything dissipated, like जो भी मेरा stress, tension, जो भी मेरा बहुत like थोड़ा सा physically tiring वो था. So everything was, in the way he welcomed. So I was so appreciative that when I came back to the room also, I was just thank you so much, for this kind of an amazing hospitality by the hotels. Hospitality has taken, skyrocketed. I mean, the way people make you hospitable these days, it is amazing. There's so much to learn by the hospitality industry. And more you appreciate, more you're going to get that in the future. Hai na? Because wherever you focus, wherever the energy goes, that area amplifies and expands in your life. तो किसी भी चीज के बारे में अगर आपने छोटा सा भी किसी ने आपको देख के स्माइल किए ना, आप मन में अगर उसके लिए थैंक यू बोल दो, आप देखना दैट योर लाइफ विल बी फुल ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स एंड अप्रिसिएशन एंड पीपल सपोर्टिंग यू. दिस इज हाउ लाइफ इज. सो ये क्या है, कंडीशनिंग करनी पड़ेगी हमको अपने लाइफ की, क्योंकि हम बिल्कुल ही कंप्लेनिंग जोन से 100% अप्रिशिएटिव जोन में मतलब हम बन जाते हैं. तो हमारा बीइंग चेंज हो गया है ना. कल उस चैप्टर में यही लिखा हुआ था, जो मैन इन द मिरर वाला, जो माइकल जैक्सन के सॉन्ग के ऊपर वाला जो वो था पैराग्राफ, उसमें यही लिखा हुआ है that when you look at things, the way you look at life, that's totally changed because you have majorly, you're constantly changing. ओके तो सब कुछ हमको हमारे एनवायरनमेंट में जो चीजें हो रही है ना, अब हमको बदलती हुई नजर आएंगी. और क्योंकि हम उनमें इतना फोकस और एनर्जी डाल रहे हैं, लाइक अगर हमारी किसी ने इधर से सामान रख के भी उधर किया है ना, इसका मतलब है आपको उनको स्माइल करके बस थैंक यू बोल दो. आप देखना कि उस एक एक्ट की वजह से 50 चीजें आपकी जिंदगी में फुलफिल हो जाती हैं. मतलब आपको पता भी नहीं होता है कि कहाँ हमको कहीं ऐसी सिचुएशन जब जिंदगी में आएगी ना, जब आप हेल्पलेस होगे, आप देखना कि कितना बड़ा आपकी जिंदगी में वो दरवाजा कुछ खुलेगा और वो चीज आराम से हो जाएगी. सो जब अप्रिसिएशन में रहने लग जाते तो ये होता है. अभी there's one किसी का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि she was not comfortable sharing her name, बट उन्होंने कल मुझे अलग से मैसेज किया था, वॉइस मैसेज भेजा हुआ था. उन्होंने बताया था किसी रीजन से वो ग्रुप में नहीं शेयर कर पा रही, तो उनको कल बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी और उनको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए था. आई थिंक 70,000 चाहिए था उनको और बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड थी. ठीक है, तो उन्होंने कल ही मैजिक चेक भरा क्योंकि ऑब्वियसली, और बहुत ग्रैटिट्यूड ऑब्वियसली दिया मैजिक चेक को. एंड 3 घंटे में उनके पास 1 लाख रुपए आ गए. कैन यू बिलीव इट? और वो अभी सुन रही हैं और मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो अपना किसी रीजन की वजह से नहीं कर पा रही थी. 3 घंटे में शी गॉट 1 लाख रुपीज. अब ऐसे ही थोड़ी ना आ गए. नथिंग इज अ कोइंसिडेंस इन लाइफ. जिंदगी तो शुरू से थी, पहले भी हमको पैसों की जरूरत पड़ सकती थी, तो इस तरह थोड़ी आते थे. 3 घंटे में 70,000 यूनिवर्स से मांगे, यूनिवर्स ने कहा लो 1 लाख रुपए ले लो, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए. कैन यू बिलीव इट? दिस इज हाउ इट हैपेंस. जब आपने कोई एक छोटी सी चीज को शायद एक्नॉलेज किया था, शायद नारियल पानी पिया था और किसी वेंडर ने आपको कोकोनट वाटर दिया था, आपने स्माइल करके उनको थैंक यू बोला और बहुत अप्रिसिएशन में आपने नारियल पानी पिया, उसकी वजह से आपको 1 लाख रुपए मिल जाते हैं. पता है, इस तरह से चीजें होती है. इट इज नॉट दैट आपको हमेशा वही मतलब कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलेंगे या लोग हेल्प करने मिलेंगे. पता नहीं किस रूप में ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आती हैं, आपको ये पता नहीं होता है. वो तब आएंगी जब आपको बहुत जरूरत है उस चीज की, वो तब वो ब्लेसिंग के रूप में आती हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ कि अप्रिशिएटिव मोड में रहो, स्पेशली जब खाली होते हो. आप देखना कि द यूनिवर्स कॉन्जर्स अप, और पूरे टाइम आप देखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है. नहीं हो लाइक वाओ, but at least say wow, amazing, this is like thank you so much universe for doing this to me, thank you so much for giving me this such a huge room. अब मैं ये थोड़ी सोचूंगी इतने पैसे मैंने होटल के दिए, उनका तो बनता है ना मुझे इतना बड़ा सा रूम देना और इतनी फैसिलिटीज देना. हम ऐसे ही करते हैं, इतने पैसे में इतना थोड़ी वो मतलब ऐसे. नो, आई मीन जस्ट अप्रिशिएट व्हाट यू हैव. जब मैं वो कल रूम भी छोड़ रही थी तो मैंने खूब मैजिक डस्ट उस रूम में डाली. मे बी फॉर बजट ट्रैवलर्स वो रूम बहुत अच्छा था, और कितना अच्छा है दैट लोगों को कम अमाउंट में मतलब इतने लग्जूरियस होटल में रहना पड़ेगा और वो सारी चीजें. So it is like that. It's never in the complaint then expecting more of those things, और वो बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं. नहीं तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप छोटी छोटी चीजों को चुन चुन के उनको थैंक यू बोलना शुरू हम जब करते हैं. ठीक है,
तो यही आज का मतलब गोइंग फॉरवर्ड, तो अब से हमारा बीइंग ही चेंज हो रहा है, हमारा बीइंग अब ऐसे ही चेंज होगा, मतलब बीइंग इज ING ओनली, तो लगातार चेंज हो ही रहा है हमारा, और उसको चेंज करते रहो, ठीक है। अब छोटी छोटी चीजों में अप्रिसिएशन, आपको बहुत सुंदर ग्रास नजर आ रही है, अगर आप अपने घर से निकले और वो साइड साइड पाथवेज होता है, वहां पे ग्रास है, उस ग्रास को देख के थैंक यू बोलो और मन में फील करो, सच ब्यूटिफुल ग्रीन ग्रास। Okay, so it is so beautiful to see grasslands all around. I think all of us love grasslands, है ना, that way. So अब we have to make that, जो खा रहे हैं पी रहे हैं जो भी है सब में थैंक यू। हाँ जी, let's go forward। हाँ जी दीपक। Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, grateful, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Quote, whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Unquote. Remember the magic. It was created for you. Magic practice number 28. Remember the magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Second, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Third, as you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. Fourth, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful sorry, why you are grateful for them. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Deepa, for your beautiful, slow reading.
सब penetrate हो रहा था दिमाग में हमारे. Thank you. Yeah. So इसमें ये वाला it's such so beautifully written that I can assure you that every single day of your life is full of blessings, है ना? हमको में भी 5 ही दिखती हैं. कभी कभी अगर हम आज सोचेंगे कि कल क्या क्या हुआ तो 10 ढूंढेंगी, लेकिन dwell on it, sit on it and find out, जितना ज्यादा निकाल सकते हो. This you can do while walking. You can also do it when you're doing something, like keep thinking about more and more things. And इसमें है, and when you have opened your eyes to see the truth of this, जब हमको पता लगता है सही में यार कल तो इतना सारा मतलब ये, और रोज ऐसा होता है हमारा, रोज ऐसा होता है कि मे बी हम लिफ्ट में हैं और किसी ने हमको स्माइल दी, हम गए और लिफ्ट ना उसी ग्राउंड फ्लोर पर थी, we didn't have to wait for it. Kabhi kabhi we just meet someone and it is just a casual conversation and a hi hello kind of a thing. Sometimes it is a call, sometimes it is we are just walking and we get this stunning view and like hum usko ignore kar dete hain. Kabhi hum kuch kharidne gaye, there's a nice market near our house and like you should feel so good about it. Kabhi we've gone to a mall और वहां पे बहुत अच्छा सी फीलिंग आई वहां पर जाके, आपको अपनी फेवरेट आउटफिट मिल गई. इस तरह से कुछ कुछ होता ही रहता है, छोटी छोटी चीजें भी घर में होती रहती हैं, है ना? सो इट इज लाइक जब हमारी आंखें खुलेंगी ना ये सब ढूंढने के लिए, अभी आंखें थोड़ी सी बंद थी अभी तक पहले तक, सो अब आंखें हमारी खुलती जा रही हैं. नाउ वी आर आईज आर एबल टू सी द ट्रुथ ऑफ दिस. You will have opened your heart to the magic of life, and that is when this magic full-fledgedly enters into your life big time, and your life will be abundant and magnificent. Okay, so the quick fix to make the life abundant and magnificent is जो हो रहा है उसी वक्त, मैं तो उसी वक्त कर देती हूँ. We cannot hear. Yes, we Or can't. We Oh, can't. I even thought I our can't. screen is like this. Wi-Fi. Yeah, I got logged out because I'm logged in from the hotel Wi-Fi. Maybe it's gone off, so I've just connected from my phone. Wait, I'll just try and connect it to this. So Poonam, you're the main host, right? Because I'm not connected. Yes, ma'am, मैंने आपको बना दिया अभी. अभी इस वाले फोन में बनाया है. हाँ जी, अभी बनाया है. मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी ना, क्योंकि ये तो फोन पे है, फोन पे मेरे पास नहीं है ये टेक्स्ट. So मैं अपने लैपटॉप से लॉग इन करके मैं शेयर करती हूँ. हाँ, कोई बात नहीं, तब तक I'll just हाँ. मैं करती हूँ ठीक है कुछ. मैम. हाँ जी मैम, आप इतने वो करिए, मैं वो करती हूँ. Poonam, Shiba here. Let me know if you want me to share the screen. शिबा, आपने अभी सारे वो चेंज हो गए हैं शिबा. I'll only do it. Okay. हाँ, मैम इतनी देर आप एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, हाँ. मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर दिया. So ma'am, It's I okay, will I'm connected from my phone, so ma'am, you want me to share the screen also? नहीं, वो हो गया. हो गया. गया. अच्छा, ठीक है जी. So I'm logging out from my phone. I'll just bring the screen on. Yeah, okay. So this is what is the practice for today. So इसमें यही लिखा हुआ है that open your eyes to the truth of magic all around you, then your heart will open and you will see your life as magnificent and abundant. So we'll just go to the magic practice. जिसमें सुबह it is count your blessings. So we have to write a minimum of 10 blessings, reread it and say thank you, thank you, thank you 3 times.
Okay, then remember the magic is कल में से खूब सारा magic ढूंढो, खूब सारा magic of gratitude कि ये हुआ वो हुआ in the smallest of the thing. You know, like you can take like 10 minutes to find. It's not just about, you know, ऊपर surface पे से चार. इसमें ये है ना, scan the surface and see what more that happened. And that's about it. You can write it or you can do it in your mind. I mean, of course, like it's totally your call because हमारी तो ये book चलती रहती है. It never ends. So हमारे लिए magic never ends वैसे भी है ना? और magic rock practice, that is what it is. रात को सोने के पहले you have to pick up your magic rock and again, remember all the things that had happened during the day, pick the best one and say thank you and go to sleep. So this is about the practice. So now we go to the other book, Power of the Subconscious Mind. So Poonam, you have to start a fresh chapter. How much did you do? Because yesterday I had to log out because my flight was. Yes, ma'am, we're going to start from the beginning only. I just did the points yesterday. Okay. All right. And thank you so much for organizing and arranging, and Sheba for always coming to the aid. So yeah, this is chapter number 10. So wealth वाला हमने जो पिछला chapter किया था वो हमने खत्म किया, तो ये next chapter भी wealth का ही है, पैसा. Okay, so generally जैसे health के भी दो ही थे ना, वैसे wealth के ये generally और concentrated है ये वाला. And it is actually changing the mindset and the level at which we actually practice. So this is chapter 10, your right to be rich with money, you know, like that way. So that is what, let's read. It's a very beautiful chapter from what I remember when I read last. So anyone who wants to? Hello. I can read. All right, Shiva. Mm. As usual, coming to the rescue. It's been a while that I've read anyways, so okay. Your right to be rich. It is your right to be rich. You are here to lead the abundant life and be happy, radiant, and free. You should therefore have all the money you need to lead a full, happy, and prosperous life. You're here to grow, expand, and unfold spiritually, mentally, and materially. You have the inalienable right to fully develop and express yourself along all lines. You should surround yourself with beauty and luxury. Why be satisfied with just enough to go around when you can enjoy the riches of your subconscious mind? In this chapter, you can learn to make friends with money, and you should always have a surplus. Your desire to be rich is a desire for a fuller, happier, more wonderful life. It is a cosmic urge. It is not only good, but also very good. How beautiful it is written in this, isn't it? I mean, like so nicely, you know, Dr. Murphy has said that you are here to grow and expand and unfold. So we all feel that, all of us, you know, no matter how young, we have children who are in their teens and in their early 20s also in the group. So we all see that even at that age, we are growing spiritually, we have grown mentally, and we have grown materially also. अगर हमने 1 साल से या 6 months या 3 months से भी अगर हम ये वाले सेशंस कर रहे हैं, तो हमने तीनों एरियाज में अपनी ग्रोथ देखी है. डेफिनेटली मटेरियल थिंग्स हमारे लाइफ में और आई हैं, बट वी हैव ग्रोन, यू नो, मेंटली अ लॉट. लाइक हमारा व्यू पॉइंट अबाउट द थिंग्स, अबाउट लाइफ, अबाउट स्मॉल लिटिल थिंग्स हैज चेंज्ड. And we've grown spiritually. We are more connected to ourselves. We are more in love with ourselves. We have so nicely, open-heartedly accepted our flaws if we have any. And still we are very appreciative of ourselves. So that is how we've grown, and we have this belief on this higher power or something, you know, the universe or the cosmic power that always operating in our lives, and the subconscious mind. We know how to lead our life. हमको ना जीने के तौर तरीके भी समझ में आ रहे हैं. So all of that, so it's so nicely
It says here that, why suffer? Like surround up, itna paisa kamao that you should surround yourself with beauty and luxury. And why not? Surround yourself with beauty and luxury. Why say nahi ji, mere paas to jitna hai bahut hai, mujhe aur nahi chahiye. Iska matlab hai aap limit kar rahe ho na apne infinite potential ko, apni infinity ko, jis tarah se. Don't say that this is enough for me. Don't have that mentality. Why not have so much? Why not give employment to 100 people in your company? Why can't we? We'll be sustaining 100 lives, right? उनको भी हम लग्जरी देंगे और हम इस जोन में है कि हमारे साथ साथ वो भी ग्रो करेंगे. तो इसीलिए डोंट लिमिट कभी भी कि नहीं जी मैं तो इतने में ही काम चला लेती हूँ या इतना ही बहुत है, बस मुझे और दिमाग नहीं खराब करना पैसे लेके. पैसे से कोई दिमाग नहीं हम लोग का नहीं खराब होगा, ठीक है. हम अलग जोन के लोग होते हैं. आई मीन वी हैव डन इट विथ आवर सबकॉन्शियस. कहते हैं ना सबकॉन्शियस इज द यूनिवर्सल बैंक. कोई ऐसा थोड़ी अब हमारी इनकम उस पर डिपेंडेंट थोड़ी यहाँ से आ रही है कि यहाँ से आ रही है कि यहाँ से आ रही है कि यहाँ से आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना. हमारे सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल बैंक है, वहां से फ्री फ्लो हो रहा है. अब बाहर के सर्कमस्टांसेस कभी ऊपर हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं, मार्केट क्रैश हो रहा है बढ़ रहा है, उस क्लाइंट ने पैसे दिए उस क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, अब आपके फ्लो ऑफ इनकम पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मनी आपके माइंडसेट से आ रहा है. जो हमने वेल्थ सक्सेस प्रोस्पेरिटी पीस ये किया है, यू विल सी. अगर आपने 21 डेज भी ये प्रैक्टिस कर ली है, your doors are going to open up for the richness or the wealth to flow into your life effortlessly, because easy does it. Okay, so everything is going to be very effortless. So think about the luxuries. Go to your YouTube videos and spend more time on seeing nice yacht cruises or whatever, the countries that you want to visit, the best hotels in the world, to, whatever it is, dwell more in that, in more of beauty, some beautiful, kuch Fiji Islands ko aap dekho ki kaisi beauty hai wahan pe, how the sea, what are the best beaches in the world, whatever it is, like, that is yours, or you want to go, you're very fond of dressing up yourself in the best designer clothes. You see that what is the trending fashions and, what designers are making what, or whatever it is. Surround yourself with beauty and luxury in the head space also. Okay, anything that's happening in the head space, you will see it happen before your eyes. It is as simple as that. And I'm sure everyone wants to give that kind of a lifestyle and life to the kids also, है ना? जो बच्चे हैं उनको भी तो इस तरह का mindset देना है, उनको भी आप उस जगह पे लेके जाओगे. Imagine their happiness and their radiant laughter and smile and, like all that, how their reaction is when you're seeing that kind of a luxury. It's actually really beautiful. So dwell more on that, think more about those things and don't limit yourself. So इसमें जो मैंने blue में highlight किया है, why be satisfied with just enough? Suppose अगर आपके पास है भी कि नहीं जी मेरे लिए तो बहुत है, why be satisfied? Expand. We are here to grow and expand, right? So why be satisfied with just enough to go around when you can enjoy the riches of a subconscious mind? Because change तो mindset करना है ना? और उसमें बहुत clearly लिखा हुआ है that in this chapter money को आप अपना best friend बना लोगे, तो money आपके साथ हमेशा रहेगा. ये लिखा हुआ है in this chapter. You can learn, so I'm reading this from the book. So in this chapter you can learn to make friends with money, and you should always have a surplus, surplus money. ऐसे नहीं कि कल को कोई मेजर खर्चा आ जाए और आपको स्ट्रगल करना पड़े और आपको डर्थ एंड डेफिशिएंसी ऑफ मनी फील होने लग जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. खूब सरप्लस होना चाहिए आपके पास, देने को सरप्लस है. आप गिफ्ट करो पैसे, आप रिसीव करो पैसे, आप अंडर प्रिविलेज लोगों की एजुकेशन स्पॉन्सर करो, आप ओल्ड एज होम में अपना कंट्रीब्यूशन करो, लाइक गो गिव आटा एंड वेजिटेबल्स और व्हाटएवर, जो भी, मतलब जिस भी तरीके से आपको पैसा, खूब सरप्लस होना चाहिए उसके साथ भी, और ये बहुत बहुत जरूरी होता है ना. सो इसमें ये योर डिजायर टू बी रिच इज अ डिजायर फॉर अ फुलर, हैप्पियर, मोर वंडरफुल लाइफ, एंड इट्स अ कॉस्मिक अर्ज. Okay, so it says it's not good, but it's very good. So let's get reading more. Money is a symbol. Yes, Shiva.
Money is a symbol. Money, excuse me. Money is a symbol of exchange. It means to you not only freedom from want, but beauty, luxury, abundance, and refinement. It is merely a symbol of the economic growth of the nation. When your blood is circulating freely in your body, you're healthy. When money is circulating freely in your life, you are economically healthy. When people begin to hoard money, to put it away in tin boxes, and become charged with fear, there is economic illness. Money has taken many forms as a medium of exchange down through the centuries, such as salt, beads, and trinkets of various kinds. In early times, a man's wealth was determined by the number of sheep or oxen he had. Now, we use currency and other negotiable instruments, as it is much more convenient to write a check than carry some sheep around with you to pay bills. So this is just a little introduction कि पैसा किस तरह से तब से अभी तक आया. It's come a long way. मतलब ये book तो 70s में लिखी हुई थी. तो उस वक्त तो of course we didn't have anything like an electronic money. अब तो money के बहुत सारे forms है. So it is just a symbol of exchange. And जैसे इसमें लिखा हुआ है जैसे blood circulate करता है ना, वैसे money को circulate करना जरूरी है. इसका मतलब है दिल बड़ा करके खर्चा करो. ठीक है, कोई वो नहीं है. मतलब ऑफ कोर्स विजडम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि जितना आ रहा है उस हिसाब से आप कर रहे हो, बट पैसा दो आराम से. मतलब दिस इज व्हाट इट सेज कि जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है और मूवमेंट गिव्स ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. अगर कोई भी चीज लाइफ में स्टैग्नेटेड होती है ना, उसमें प्रोग्रेस नहीं होती है. सो दैट्स वेरी क्लियर. इसलिए मनी भी सर्कुलेट है, आएगा और वापस जाएगा, आएगा फिर से खर्चा हो जाएगा, फिर से आएगा खर्चा हो जाएगा. और ये सर्कुलेशन या ये मूवमेंट होनी बहुत जरूरी होती है. इसमें लिखा हुआ है दैट व्हेन पीपल बिगिन टू होर्ड मनी, अगर आप बहुत ज्यादा जोड़ने लग जाओगे, ठीक है, एक तो होता है कि ठीक है सेव कर रहे हो, बट इसमें इस कॉस्ट पे सेव कर रहे हो कि आप ये देख रहे हो कि लाइक खाना मतलब सिर्फ ½ kg वेजिटेबल बनानी है, 1 किलो नहीं बनानी है, और रोज आपको पता है कि कम पड़ रही है, फिर भी आप हर चीज का अमाउंट देखने लग जाते हो. हर बार पैसे के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और बहुत ज्यादा अननेसेसरी खाने पीने पे, लग्जरीज पे भी आप जो मतलब यू आर ट्राइंग टू सेव मनी अननेसेसरली एट द कॉस्ट ऑफ इवन गुड थिंग्स दैट यू नीड टू डू. ठीक है, अगर उस तरह का होता है कि आप जोड़ के रख रहे हो बहुत ज्यादा पैसे, दैट मीन्स यू हैव फियर इन योर हेड कल के बारे में. ठीक है, एटलीस्ट अगर सबकॉन्शियस में वेल्थ लाइक जो हमने ऑलरेडी हम कर रहे हैं वेल्थ कॉन्शियसनेस, सो वेल्थ कॉन्शियसनेस का तो ये तो कॉन्ट्रेरी है ना फियर. सो इसमें अगर जो कल पूनम ने पॉइंट्स किए होंगे, मतलब मुझे लॉग आउट करना पड़ा था कल, बट उसमें एक पॉइंट ऐसा था, मतलब जो पॉइंट्स में एक पॉइंट ऐसा था कि पैसे को आप बहुत अच्छे से, मतलब बहुत जोड़ के भी नहीं, और फियर फैक्टर, मतलब यू हैव टू कंटिन्यू बीइंग इन द वेल्थ. मतलब जो हमको टूल तो मिला ही था, है ना, कि दिन में 3 से 4 बार, तीन बार स्पेशली सोने के पहले हमको वेल्थ लाइक अ ललेबाई रिपीट करना है. ठीक है, उसके बाद ये भी था दैट आपको उसी जोन में रहना है और उसके कॉन्ट्ररी नहीं करना है. एक सेकेंड, लेट मी गो बैक टू दैट बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कर रहे हैं, बट वो माइंडसेट वैसा होना चाहिए. सो हाँ, ये when you consciously affirm, so consciously हम affirm कर रहे हैं money, wealth, success या prosperity, peace, success, ये सारा कुछ कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं. So what you constantly affirm, you must not mentally deny a few moments later. थोड़ी देर के बाद आप चिक चिक पिक पिक कर रहे हो कि किसी को बोल रहे हो इतना क्यों खा लिया, या ये मैंने रखा था, छोटी सी चीज है जिसका कोई कॉज भी नहीं है, बट फिर उसके बारे में हम हैगल कर रहे हैं. ओ माय गॉड, वो तो बहुत महंगी है. बोलने की जरूरत ही नहीं है ना. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट यू कैन एडमायर दैट थिंग, है ना. जैसे सपोज कोई ड्रेस है, वो 22,000 रुपीज की है, आपको लग रहा है कि मैं 22,000 की ड्रेस अभी नहीं ले सकती, मेरा इतना बजट नहीं है. बी इन लव विद दैट ड्रेस. ओके, डोंट से कि अरे छोड़ो इतनी तो वर्थ भी नहीं लग रही है. ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती है. So your words make your world. Always remember that. Okay. So love it. Fall in love with that dress.
लाइक जो रोंडा बर्न ने भी स्कर्ट देखी थी, तो देखी थी कितना लव किया था। तो वो लव वाले चैप्टर में उन्होंने अपने पावर बुक में समझाया था दैट आई फेल इन लव विद दैट स्कर्ट, और वो तब से मेरे दिमाग में थी। अब वो स्कर्ट उन्होंने देखी थी फ्रांस में या कहीं पे किसी और कंट्री में, तब से शी फेल इन लव विद दैट स्कर्ट एंड शी वाज इन एडमिरेशन ऑफ दैट। और वो की वही स्कर्ट जब वो ऑस्ट्रेलिया वापस आ गई, तो एक जब वो जा रही थी तो एक कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था कोई और ड्राइवर, तो उनको वहां रुकना पड़ा, उन्होंने राइट टर्न देखा तो वही वाली स्कर्ट मैनीक्विन ने पहनी थी, और वो स्टोर उस वक्त बंद था। तो जब वो बाद में उस स्टोर में गई तो स्टोर ओनर ने बताया कि पता नहीं, हमने तो ये कंसाइनमेंट ऑर्डर भी नहीं किया था, हमारे पास कहाँ से हमारे ऑर्डर में ये वाली स्कर्ट आ गई, और ये एक ही पीस है, एंड रोंडा बर्न गॉट इट। तो सोचो कौन सी कंट्री में उन्होंने शी फेल इन लव। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको कुछ पसंद है ना, होल्ड ऑन टू इट, वेट, ठीक है, इट विल, यूनिवर्स विल ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। बट अगर उसी जोन में आपको रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आप मतलब अभी वो कर दिया वेल्थ इन सक्सेस, वेल्थ इन सक्सेस, वेल्थ इन सक्सेस, और फिर थोड़ी देर के बाद फालतू की बातें शुरू कर दी। तो हमको उस ग्रेटिट्यूड एंड लव वाले जोन में रहना पड़ेगा, तब जाके लाइफ चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि बस प्रैक्टिस कर ली और बाकी के पूरे दिन यू आर इन दैट। सो इसमें यही लिखा हुआ है, व्हाट यू कॉन्शियसली अफर्म यू मस्ट नॉट मेंटली डिनाई अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, this will neutralize the good you have affirmed. So don't neutralize, because nahi to +1 -1 is equal to 0. Always remember that. We don't want to stand at 0. We want to constantly go from +1, +10, +25, +100. हमको तो ऐसी लाइफ चाहिए ना। सो अच्छे से खर्च करो, और ये मत सोचो, इसको इकोनॉमिक इलनेस का नाम दिया है। जो लोग बहुत पैसा जोड़ते हैं ना, अच्छी चीजों पे भी जोड़ते हैं। अब बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सडनली अरे क्या जरूरत है खर्चा करने की, ये सब अगर ये वाला आ गया, दैट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस कॉल्ड इकोनॉमिक इलनेस। सो वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। सो इसीलिए इस चैप्टर में हमको ये सारी, तो हमको इकोनॉमिक इलनेस में नहीं है, मनी को सर्कुलेट होना बहुत जरूरी होता है, स्टैग्नेशन से ग्रोथ रुक जाती है। हाँ जी। How to walk the royal road to riches. Knowledge to the powers of your subconscious mind is the means to the royal road to riches of all kinds, spiritual, mental, or financial. The student of the laws of mind believes and knows definitely that regardless of economic situations, stock market fluctuation, depression, strikes, war, other conditions or circumstances, he will always be amply supplied, regardless of what form money takes. The reason for this is that he has conveyed the idea of wealth to his subconscious mind, and it keeps him supplied wherever he may be. He has convinced himself in his mind that money is forever flowing freely in his life and that there is always a wonderful surplus. Should there be a financial collapse of government tomorrow and all the men's present holdings become valueless, as the German marks did after the First World War, he would still attract wealth and be cared for, regardless of the form of the new currency took. Yeah. So here again, Dr. Joseph Murphy is explaining to us that ये knowledge, subconscious mind, which is the law of mind की knowledge होना बहुत जरूरी है, because it is irrespective of आपकी जिंदगी में, मतलब कहीं पैसा दिख रहा है नहीं आ रहा, सैलरी आज मिली है कल को जॉब नहीं है, बिजनेस कोलैप्स है, मार्केट अप हो गया, मार्केट डाउन हो गया. So all that is your money that you will have is irrespective of what's happening in your environment. अगर आपके mindset में आपकी income constantly आ रही है, मतलब subconscious mind में जब हम ये जो practices हमने tools सीखे थे पिछले chapter में, अगर हम ये constantly कर रहे हैं, हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. Should the government collapse tomorrow, your income will still be the same. In fact, it is always growing, So I have given you that affirmation that my income is constantly increasing and I prosper wherever I turn. इसमें हम सीखेंगे where it says that,
यही वाला जो इन्होंने जो येलो में मार्क्ड है, that money is constantly flowing into my life from different sources and I always have a surplus. So all these are constantly happening. We have to, this has to be a mindset and a self-talk. So हमारी consciousness, जब हम repeat करते हैं ना कोई भी चीज, even if you have done it for 6 days, 6 is a number also, which is 3 times double, right? मतलब 3 का double होता है, and 3 is a number of creation. So creation का double. So इसीलिए even in yogic sciences and practices में हम कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आपको अपना mindset या कुछ बदलना है, तो आप 6 दिन करोगे ना, 7th day वो आपका ingrain हो जाएगा already दिमाग में, and आप वैसे बन जाओगे. In fact, हम लोग in our industry, we say if somebody is trying to leave sugar, they think that I don't want to have white sugar anymore. और वो 6 दिन अगर बिल्कुल शुगर नहीं लेते हैं, कुछ भी मीठा नहीं लेते हैं और व्हाइट शुगर से बनी हुई कोई चीज नहीं लेते हैं, 7th day उनकी बॉडी नहीं ले पाएगी शुगर एंड इट विल नॉट आस्क फॉर इट एनीमोर. और वो जो हम सोचते थे दैट ठीक है, दिस इज लाइक पहले बहुत पसंद था, पहले बोलते थे स्वीट टूथ है और मुझे मीठा बहुत पसंद है, but even if 6 days you've not taken, you will not be able to take. और अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस 21 days के लिए कर ली, तो वो परमानेंटली चेंज हो जाती है. 21 is 2 plus 1 is equal to 3. ठीक है. सो योगिक साइंस के हिसाब से इन नंबर्स की भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है. ठीक है. सो हम तो अगर ये प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, और अगर हम लगातार, अब शुरू में हमको हो सकता है टेक्निकली बोलना पड़े क्योंकि हमारा दिल नहीं मान रहा है उस चीज को, दैट आई एम दैट वेल्थ. इसीलिए उन्होंने बोला, डॉक्टर मर्फी ने, कि सेंटेंस मत बोलो आई एम वेल्दी. नहीं है ना अभी हम बहुत ज्यादा वेल्दी, अभी बहुत ज्यादा वेल्दी नहीं है, अभी भी हमको प्राइस टैग देख के सामान खरीदना पड़ता है ना. जब तक हमारी वो स्टेज नहीं आ जाती है कि आपको कोई आउटफिट पसंद आई और आपको देखना ही नहीं पड़े हाउ मच इज इट फॉर, टेक योरसेल्फ टू दैट लेवल एंड बिलीव मी दैट डे विल कम. मैं कल ऐसे ही रूम में जब मैं वापस आई थी, आई वॉज व्यूइंग माई लाइफ वेयर I had to think 100 times. Yesterday I just got and I picked myself 2 nice shoes. Okay, like in Indian वो shoes थे, मतलब बहुत ज्यादा, जो गुजराती के वो होता है ना, गुजराती इसमें बहुत सारा लटका झटका उसमें वो सब मुझे बड़े मजे आ रहे थे वो सब देखने में. I thought with salwar kameez I'm going to wear them. They look so pretty. I did not even need to think about it. Like मैं यही अगर पहले कभी होता, I would need to think twice, like I would, should I not? So in the whole outlet, I just like 2 shoes and I just took them. Okay. This is who we become. It was not like this till about 3 years ago. Ever since we are into these practices, take yourself to that level and tell universe, can there be a day when I don't even need to look at how much it's costing me? I'm just looking at the beauty of the thing and can I buy? And you will see that you will reach that level very, very soon. Okay, that is who we have to become. So enjoy that kind of a freedom. Isme likha hua hai na, it gives you that sense of freedom, that, and everything in every area. So yeah, I mean like ये लिखा हुआ है, the reason for this, मतलब अगर आपकी वैसी situation आती है, आपकी circumstances are so good, the reason why in spite of the market crash, in spite of salary नहीं आई, in spite of bonus नहीं मिला, so you are still floating in the sea of abundance all the time because आपके subconscious mind well consciousness का हो गया है, क्योंकि आपने 21 days ये repeat किया होगा और आपका mindset ही अब वैसा हो गया. ठीक है. And now you will be supplied wherever you are. इसमें लिखा है ना, now that person will keep him supplied wherever he may be. So you will be supplied with all of that. So because उस person ने, he has convinced himself in his mind that money is forever flowing freely into his life. उसने अपने आप को बार बार ये बोल कर करके mindset ही ऐसा बना दिया that money is forever flowing in my life and there is always a wonderful surplus. और अगर कोई collapse होगा market का, world war ये वो whatever, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि money is supplied from that is the universal bank. Okay, it is not somewhere outside your life. हाँ जी. Why you do not have more money? As you read this chapter, you're probably saying, I'm worthy of a higher salary than I'm receiving. I believe most people are inadequately compensated.
One of the causes many people does not have more money is that they are silently or openly condemning it. They refer to money as filthy liquor, or the love of money is the root of all evil. Another reason they do not prosper is that they have a sneaky subconscious feeling there is some virtue in poverty. This subconscious pattern may be due to early childhood training, superstition, or it could be based on a false interpretation of scriptures. एक्चुअली हमने अगर कभी अपने पेरेंट्स को कभी बचपन में देखा हो कि जब पैसों की बातें कर रहे थे कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे नहीं मिले, और थिंग्स लाइक पैसों से लोगों का दिमाग खराब होता है, पैसा इज द रूट ऑफ ऑल इविल, अगर इस तरह की चीजें सुनी है तो हमारे माइंडसेट में वो एक्चुअली परमानेंटली टैटू बन गई है, तो अब उनको निकालना तो पड़ेगा ना। उनकी वजह से फ्री फ्लोइंग में हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, और पैसे के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट। अगर एफर्ट लग रहा है बहुत पैसे कमाने में, इसका मतलब है ये भी हमने ये कही कि बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, मेहनत करोगे तो पैसे आएंगे, मेहनत से पैसे नहीं आते हैं, इजी डज इट, ठीक है। सो बहुत आराम से एवरीथिंग फ्लोज इनटू योर लाइफ विद ईज एंड एफर्टलेसनेस. There is no efforting required in anything. It is all the game of the mind. It is called, इसमें लिखा हुआ है law of mind. So इसमें वो जो पिछले पैराग्राफ में, that if one understands the law of life, you will be always be supplied. Like you'll never be in dearth of money. You'll always be supplied. So your supply is coming from how you have trained your mind. So we are in the mind training right now, because हमने भी शायद बचपन में या कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए होंगे जहां पे पैसे की कमी हो गई थी, और हमको एक बार ऐसा लगा दैट आई नीड मनी, और लेट मी आस्क फॉर मनी, और पीपल हु से दैट आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग अ हायर सैलरी देन आई एम रिसीविंग. सो व्हाई दैट सैलरी इतनी ज्यादा नहीं मिल रही है? बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, बिकॉज ऑफ पास्ट कंडीशनिंग की वजह से हो सकता है, या अपने पैसे को क्रिटिसाइज किया हो दैट मनी इज अ फिल्दी ल्यूका, उसके पास बहुत पैसे हैं इसलिए उसका दिमाग खराब है, or the love of money is the root of all evil. या फिर आपने ही सोचा है कि मतलब कुछ ऐसा है कि नहीं, कम पैसे होते हैं तो खुश रहते हैं, ज्यादा पैसे होते हैं तो रात को नींद भी नहीं आती है, ऐसे भी कुछ हम वियर्ड चीजें सोचा होता है हमने, है ना। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ये सब या किसी सुपरस्टिशन या मेंटल ट्रेनिंग के चक्कर में हम खुल के नहीं जी पा रहे हैं, मतलब पैसा का फ्री फ्लो नहीं हो रहा है हमारी जिंदगी में. So that's not a good thing also. Like उनको हटाना पड़ेगा हमको by constantly affirming to ourselves wealth, success, prosperity, peace, or only wealth. Okay, and that how we have to do it, like in a sleepy, drowsy state, in the alpha state of mind, and you keep repeating for 5 minutes. तो पहले मुझे पता ही नहीं लगता था 5 minutes कब हो गए, तो मैंने अब उसमें permanently वो set कर लिया है timer. So I do it for 5 minutes like that. अदरवाइज पता ही नहीं लगता, और फिर डॉक्टर मर्फी बोल रहे हैं 5 मिनट, तो 5 मिनट्स तो करना ही पड़ेगा ना, तो इस तरह से. तो या वी कैन ऑल डू इट. हाँ जी शिवा. Money and a balanced life. One time a man said to me, I am broke. I do not like money. It is the root of all evil. These statements represent a confused neurotic mind. Love of money to the exclusion of everything else will cause you to become lopsided and unbalanced. You're here to use your power or authority wisely. Some men crave power, others crave money. If you set your heart on money exclusively and say, money is all I want, I'm going to give all my attention to amassing money, nothing else matters. You can get money and attain a fortune, but you have forgotten that you are here to lead a balanced life. You must also satisfy the hunger for peace of mind, harmony, love, joy, and perfect health. By making money your sole aim, you simply made a wrong choice. You thought that that was all you wanted, but you found after all your efforts
that it was not only the money you needed, you also desired true expression of your hidden talents, true place in life, beauty, and the joy of contributing to the welfare and success of others. By learning the law of your subconscious mind, you could have $1 million or many millions if you wanted them, and still have peace of mind, harmony, perfect health, and perfect expression. Yeah, so this is so beautiful. Firstly, thank you, Shiva, for reading. This is all we'll be able to do today. Thank you so much for all your support always. So in this, we see that, the money, it has to be, it's not that, ठीक है, मेरी जिंदगी में बस पैसा important है. I don't care about my health. I don't care about my family. I don't care about who feels what. You're behaving in the rude manner. You're not looking after your khana pina and just running behind money. That's also not good, right? So हमको ये realize होना है. खैर हम लोगों के साथ ये problem कभी नहीं आएगी, because we are also attached to the magic book and we have that gratitude and we have that sense of giving the money with joy, receiving the money with a lot of love, being in the appreciative mode all the time. So we have all of that, okay? But generally there are people like that, जिनको लगता है कि बस मेरी जिंदगी में तो बस मुझे पैसा कमाना है, बाकी I don't care about my health, कुछ खाने पीने का टाइम नहीं है, कुछ वो नहीं है, लोगों के साथ ठीक से बिहेव नहीं करना, लोगों को पैसे नहीं देना कि नहीं मेरे खर्चे हो जाएंगे, मैं इतनी सैलरी नहीं दे पाऊंगी, like है पैसा, it's not. Yes, अगर आप सैलरी किसी की बार्गेन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, that's because you have so much income right now, तो इसलिए maybe you're just able to give them 20,000 या 25,000. लेकिन इमेजिन उस पर्सन के पास 50 लाख हर महीने आ रहा है, फिर भी वो 25,000 के लिए हैगल कर रहा है. हर महीने 50 लाख रुपए आ रहे हैं ना, 50 लाख हर महीने आ रहा है, but haggling for these little things. Okay, that means that in that person's mind, that person does not have an abundant mindset. So ये हमको realize बहुत करना जरूरी है कि एक good quality life भी तो जीनी है ना. ऐसा थोड़ी है बस पैसा है, मैंने कहीं वेकेशन पे नहीं जाना क्योंकि मुझे पैसा जोड़ना है, ठीक है? ऐसे नहीं होता है. पैसे को सर्कुलेट करना जरूरी है. तो इसमें ये लिखा हुआ है that पैसे के साथ साथ ठीक है बहुत ज्यादा पैसा और सबको बहुत ज्यादा पैसे, you have to fall in love with the money, but you can't be falling in love with only money. आपको मनी किस रीजन से चाहिए, उसके आउटलेट्स क्या क्या है. हमेशा मैं बोलती हूँ ना, वाई के बारे में सोचो, हाउ के बारे में मत सोचो. हाउ क्या आपने टैटू कर दिया अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, दैट मनी इज कमिंग. ओके, हाउ में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स का काम होता है, एंड इट्स बेटर वी डोंट मेडल इनटू दैट. ठीक है, आप वाई में जाओ. वाई डू आई, वो फोकस व्हील यही होता है ना, अब्राहमिक्स वाला फोकस व्हील इज, आपने लिखा 50 लाख रुपीज पर मंथ सपोज, है ना, वो आप चाहते हो इनकम, वो आपका गोल है. अब उसमें आप साइड में बनाओ वाई, उस 50 लाख से आप क्या क्या करोगे. यू विल गो टू 3 डिफरेंट कंट्रीज एवरी ईयर. फिर आप अपने पेरेंट्स को बहुत सुंदर सा एक घर खरीद के दोगे. ऑब्वियसली आप ईएमआई पे घर खरीद ही लोगे ना, हर महीने 50 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप घर खरीद के दोगे और उनके चेहरे पे आप वो खुशी महसूस करो. तीसरा क्या करोगे, यू विल बाय योरसेल्फ अ लग्जरी कार. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, अपना एक बहुत अच्छा सा बिजनेस स्टैब्लिश करोगे जिसमें ये होगा. और क्या करोगे, और ओल्ड एज होम में कंट्रीब्यूट करोगे. और क्या करोगे, और आप उस ब्रांड के कपड़े खरीदोगे जो अभी आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तब आप बहुत इजीली करोगे. और अपने पेरेंट्स को भी आप बहुत अच्छी जगह पे शॉपिंग के लिए ले जाओगे. और क्या करोगे, और आप अपने ब्रदर्स सिस्टर्स स्पाउसेस बच्चों, उनको आप लग्जरी एंड अबंडेंस, you'll go for coffee to the most best of the lounges, hotels or wherever it is, and that way. और क्या करोगे, और आप ये वाला कोर्स करोगे जो अभी 4 लाख रुपीस का है, जो शायद आपको करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, या you have to think twice about paying for that, so you will be able to do that also. Think more on those terms rather than thinking on these, because इसमें यही लिखा हुआ है, देखो पैसा बहुत अच्छे से तभी आएगा. इट इज नॉट जस्ट पैसा पैसा पैसा, ठीक है. इट्स लाइक वो उससे आपका टैलेंट्स का एक्सप्रेशन मिलेगा, इजंट इट. आपके टैलेंट्स को एक्सप्रेशन मिलेगा, पैसा आएगा. You will find your true place in your life. You will enjoy the beauty of this nature, the beauty of the world. You will get the joy of contributing to the welfare and success of others. इतना सारा, ये सारा. इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ ऐसे, मतलब वो कुएं में जो मेंढक होता है, फ्रॉग इन द वेल, वैसे नहीं बनना है ना हमको. बस पैसे पैसे उसी में डूबे रहेंगे,
कुछ नहीं है, वो मतलब शर्ट पहनी है उसके बटन टूट रहे हैं, यू नो, बट नहीं नहीं मुझे पैसा चाहिए ना, मुझे खर्चा नहीं करना, मुझे पैसा चाहिए ना, मुझे कोई ट्रैवल नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसमें भी कमी करो इसमें. दैट इज नॉट हाउ वन गोज, दैट इज पॉवर्टी माइंडसेट. ठीक है, पैसा अगर है भी बहुत ज्यादा, लेकिन माइंड तो पॉवर्टी वाला ही है ना, उस पैसा नहीं ज्यादा बढ़ता है. और फिर हेल्थ मतलब कहीं ना कहीं कुछ वो आने लग जाएंगे सिम्टम्स, यू नो, लाइक हेल्थ में आ सकते हैं, कुछ आ सकते हैं. सो दैट इज नॉट, यू हैव टू एंजॉय द ब्यूटी एंड लग्जरी ऑफ लाइफ. और यही चीज फर्स्ट पैराग्राफ में जब ये चैप्टर शुरू किया था उसमें लिखा हुआ था that you enjoy खुल के enjoy the beauty and luxury of life and whatever, and have more millions in dollars and in your life, you know, because all that is coming from the laws of the subconscious mind. And then जब बहुत पैसा जब आ रहा है, ये फिर हमारे हमेशा होना चाहिए that you should have the peace of mind, harmony, perfect health and perfect expression. ये आना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो ये बोलते बोलते भी ऐसे मूवीज में देखा है, मूवीज में दिखता है ना, दैट पर्सन हैज सो मच मनी बट डजंट वांट टू स्पेंड ऑन गुड क्लोथ्स एंड गुड शूज एंड स्टिल हैविंग दैट पॉवर्टी माइंडसेट. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी आप जिंदगी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, बट पैसे की एक्सप्रेशन इज इन traveling, being happy, you know, like giving money where donations are required, see the smiles on other faces, others' faces. आप अपने पेरेंट्स को ऐसी जगह पे लेके जाओ, पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से हमको पाल पोस के बड़ा किया है ना. अब उनको हमको उस तरह की ब्यूटी एंड अबंडेंस दिखानी है जो हम क्रिएट कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से. उनको आप लेके जाओ, ताज होटल में बिठा के उनको अच्छे से ट्रीट देम अ मील, and then you see the happiness and joy on their face. वो तब भी मना करेंगे कि क्यों बेटा आप हमको वहां पे क्यों लेके जा रहे हो, यू नो, लाइक इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, इतना खर्चा मत करो, हम कोई दूसरी जगह खाना खा लेते हैं, है ना. पेरेंट्स का ऐसा होता है माइंडसेट, बेचारे इतने स्वीट होता है और उन्होंने इतना स्ट्रगल जिंदगी भर किया होता है. ठीक है, इतनी सफरिंग होती है, कभी कभी वो सफरिंग अपने हम पे भी निकालते हैं, हमसे भी झगड़ा कर लेते हैं, isn't it? But then don't feel bad about what they do, you know. Inadvertently, subliminally, in their mind, deeply, viscerally, they really love us. Okay, the way they have given education. हम जो आज हैं उन्होंने ही तो एजुकेशन दी है ना हमको. हम तो ऐसे थोड़ी ना पढ़े, मतलब कौन एक एक दिन कैसे बच्चे पालते हैं ना, हमको पता लग रहा है ना अभी. इट्स नॉट वेरी इजी. ओके, सो दे हैव डन सो मच. और वो नहीं गए कभी बहुत ज्यादा लग्जूरियस प्लेसेस पे शायद, है ना. some parents have never been to Taj Hotel to have dinner on their own. They would never do that. They would always think कि अच्छा बच्चों के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा. पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं. take your children also to those places more and more. उनका abundant mindset बनता है इनसे. ठीक है, फिर उनको वो नहीं लगेगा और उनका एक बार जाने से वो mindset change हो जाता है. Take them again next month. You know, give them that kind of a luxurious environment. Let them get the feel of it and that kick of it. They feel very good about it. And of course your parents, I mean, no doubt about that. That is a source relationship. जब source relationship के लिए हम काम करते हैं, ठीक है, तो फिर आप देखना कि वो abundance जैसे 100 चेन की तरह ना, एक वो लग जाती, झड़ी लग जाएगी पैसे की. ये बहुत prominent relationship होती है. सोर्स जहां से जिंदगी शुरू हुई है, जिंदगी की शुरुआत ही माँ बाप से हुई है ना, आप उनके लिए कुछ भी करोगे ना, वो चीज मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगी. ठीक है, तो इसलिए वो भी बहुत जरूरी है. सबसे पहली चीज, ऑफ कोर्स ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट बहुत सारी चीजें होती है जो किताब के अलावा एक्सपीरियंसेस से आती हैं, और उसमें आप देखना कि इतने अच्छे से आपका, यू नो, द वे लाइफ विल बी टेकन आउट, दैट इट विल बी ब्यूटिफुल. Okay, so give them that. I mean, take them to the best of the hotel. Taj, I said, because in Delhi, that is one of the best hotels we have. Taj Palace. दो तीन है, but the one is in the like really nice. So in whichever country, city we are in, you know, like try and expose them more to that kind of a luxury. Everyone around you, and you yourself also. You are the most important person in your life, no? That also. So yeah, we'll do only so much today. So we will meet again tomorrow, and thank you for everything. Thank you for the beautiful explanation. Very, very. Thank you. Really, every morning, Deepti for ma'am, another session today, ma'am. It was so much every fun. morning is like So much of beautiful with you. breakages. I don't know, Priya, you'll have to work at making it, you know, like I'll just stop the recording. But ma'am,